Hello, good morning. So, in the fourth chapter, we are discussed the essential concept uh, which were needed to deployment, which were necessary for the deployment of any software. Okay? Which are the things which are included in the management spectrum. So, all these things are about the management concern. So, in the today's lecture, we are going to focus on the software cost estimation because each and every stage from communication to deployment need money, right? Without money, we cannot deal the any activity. Means not only in the software concern, but in the real life world, we cannot deal with without the money concern. So that's why we need to figure out, we need to monitor, we need to manage those money because the software engineering is all about the pure business. So the cost, the money uh, plays the vital role in this software industry. So to do that, to maintain this figure, we need to estimate those costs required for individual module. Okay? So in the today's lecture, we are going to focus on this software cost estimation. Okay, so we discussed earlier, for any new software project, it is necessary to know how much it will cost to develop and how much development time will it take. Means money and time plays the crucial role in software engineering journey. Okay, so several estimation procedures. Estimation means क्या कि फाइंड आउट करना कि कितने अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट ऑफ टाइम में वो होने वाला है. दैट इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन. ओके, सो we need to perform several estimation procedures have been developed and are having the following attributes in common. So these are the attributes which are going to be considered while we are dealing with the software cost estimation. So first क्या है, project scope must be established in advance. Scope क्या है, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बहुत लेक्चर में वो डिस्कस किया है. So you knew this concept scope very well, right? So project scope must be established in advance. So before going to the software cost estimation, we need to establish this thing. Then the second is software metrics are used as a support which evaluation is made. Okay, then the project is broken into small pieces which are estimated individually to achieve the true cost and schedule estimate. Several options arise. Then the delay estimation, and fifth is used symbol decomposition techniques to generate project cost and schedule estimates. And the last is acquire one or more automated estimation tools. So if you need to figure out the software cost estimation, you have to perform these 6 activities. Okay, then what is the use of cost estimation? So during the planning stage, which is our communication के बाद हम लोग directly planning ही करते हैं. Means our second stage, one needs to choose how many engineers are required for the project. मतलब वहां पे मुझे पता चलेगा कि कितने इंजीनियर्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहां से शुरू होने वाली है, कितने आदमी मुझे चाहिए, कितने बंदे चाहिए. एंड मीन्स वहां पे सिर्फ एंड टू डेवलप अ स्केड्यूल. सो डिपेंडिंग ऑन दिस human resource thing, we then configure the schedule and recruit the people. Obviously it depends on the skills, it depends on, मतलब अगर जावा पे चाहिए तो जावा पे मैं रिक्रूट करूंगा. अभी एंगुलर जेएस चल रहा है, रिएक्ट चल रहा है, ठीक है. सो डिपेंडिंग, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द सॉफ्टवेयर नेचर, बट वी नीड टू रिक्रूट द पीपल एट द फर्स्ट स्टेज. सो इसका यूज ये है कि हमें पता चलेगा कि कौन से बंदे कब हायर करने, ठीक है. Then the second is in monitoring the project progress, one need to access whether the project is progressing according to the procedure and takes corrective action if necessary. Means basically we are tracking the management, the cost estimation and the app development simultaneously in the second phase using this software cost estimation strategy. Okay. Okay, then the next topic is all about the models used in the models created in software cost estimation. So a model may be static or dynamic. Huh? In a static model, a single variable is taken as a key element. कौन सा भी एक variable मैं लूंगा as a key element for calculating cost and time.
means whenever we are talking about the cost, the only thing cost is not coming in mind in the picture. Along with the cost, there is one more concept is attached in my scenario, that is time. Cost and time इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से. So in a dynamic, ये static का scenario है. In a dynamic model, all variables are interdependent and there is no basic variable. ठीक है. So in the static there is a relation between cost and time, and in the dynamic all the variables are interdependent, means they have their own existence. Okay. And there is no basic variable, जैसे कि हम लोग ने स्टैटिक में इनिशियली एक वेरिएबल लिया था. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, दिस फिगर depicts the model for software cost estimation. ठीक है. स्टैटिक और सिंगल वेरिएबल मॉडल दिया है और यहाँ पे स्टैटिक और मल्टी वेरिएबल मॉडल्स दिए हैं. ठीक है. सो मैंने अभी स्टैटिक और सिंगल के बारे में बात कर रहा था. So when a model makes use of single variable to calculate desired value such as cost, time, efforts, etc., it is said to be single variable model. ठीक है. मतलब एक वेरिएबल को टारगेट करके हम लोग ने अगर ये डिजायर्ड वैल्यू कंसिडर की, फाइंड आउट की या फिर कैलकुलेट की, लाइक कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स, so that is nothing about my single variable model. And the equation for this single variable model is C is equals to A means small a into capital L raised to small b, where C is cost. मतलब अगर मुझे cost find out करनी है तो फॉर्मूला क्या है, is equals to A and B are constants, means दो constant है A और B, और L क्या है, मेरी size है. Those constants are nothing about our software programming languages या फिर human resources, methodologies, कुछ भी हो सकते हैं constants. ठीक है. So depending on these constants, we are find the cost with respect to size. Okay. The software engineering laboratory established a model called SEL model for estimating its software production. This model is an example of static single variable model. So यहाँ पे भी उन लोग ने वो दिया है, देखो कैसे फाइंड आउट करनी है, E, DOC और L. So E is my efforts. So if you need to find out the efforts, we are applying the same formula. DOC के लिए भी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी सेम ही है. D मतलब क्या है, ड्यूरेशन है, और L is nothing about our size, मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर कोड. ठीक है. Then the next is multivariable model. ठीक है. स्टैटिक और multivariable model. So these models are based on method 1. They dependent on the several variables describing various aspects of the software development environment. In some model, several variables are needed to describe the software development process and selected equation. So these models are called multivariable models. Means there are more than one variables are combined with each other and performing the several results. That is nothing about, नाम नहीं है, multivariable. Okay. So suppose Watson and Felix developed the models at IBM. Example है, for provide the following equation gives a relationship between lines of source code and effort. ये equation हम लोग ने generate किया है. E is equal to 5.2 into L raised to 0.91 something. So in the same manner, duration of development is given by. So अगर मुझे इससे duration find out करना है, so I can find the duration in this sense. The productivity index find करनी है. Uses 29 variables which are found to be highly corrected productivity as follows. So ये productivity का अभी थोड़े यहाँ पे mathematics है, because we need to find out the estimation. ठीक है. So applying those formulas here we are and applying this multivariable scenario here we are finding the expected cost estimation. ठीक है. So यहाँ पे उन लोग ने एग्जांपल भी दिया है कि वो कैलकुलेट अगर कर सकते हैं तो वो बहुत सारे सिनेरियोज है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये उन लोग ने फाइंड आउट किया. ठीक है. These are not the important factor with respect to your online exam. You need to just focus on the single, to focus on the cost estimation models topic only. ठीक है. जो यूज है उसके पॉइंट्स है और ये डायग्राम है. ठीक है. So I guess here we are done with the cost estimation model. Okay, well then the next topic is COCOMO model. ठीक है. So COCOMO stands for constructive cost estimation model, which is built in 1981, which is the advanced part of our software cost estimation. ठीक है.
and it is one of the most generic used software estimation models in the world nowadays. So it predicts the efforts and schedule of a software product based on the size of the software. Okay? So the necessary steps in this model are: get an initial estimate of the development effort. हाँ, get an initial estimate, मतलब स्टार्टिंग में ही initial estimate वो कैचअप कर लेगा फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिलीवर्ड लाइन्स ऑफ सोर्स कोड. मतलब इससे मुझे कितना इनिशियल एस्टिमेट मिलने वाला है, वी कैन फेच दिस ऑन द अर्ली स्टेज. देन सेकेंड, determine a set of 15 multiplying factors from various attributes of the project. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, determine set of 15 multiply factors, 15 ऐसे multiplying factors from various attributes of the software, जो कि हेडर फाइल से, फंक्शन से अलग अलग फैक्टर से हम लोग वो 15 फैक्टर्स ढूंढने वाले. एंड देन थर्ड, कैलकुलेट द एफर्ट एस्टिमेट बाय मल्टीप्लाइंग द इनिशियल एस्टिमेट. उसके बाद द एफर्ट मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे एफर्ट हम लोग ने किया था इनिशियली, वो मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑल द मल्टीप्लाई फैक्टर्स. फिर उसके साथ ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये और ये दोनों कैलकुलेट करेंगे. दैट इज मल्टीप्लाई द वैल्यूज इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मतलब ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे. द इनिशियल एस्टिमेट जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल एस्टिमेट. ठीक है, is determined by an equation of the form used in the static single variable models. जो लास्ट लेक्चर, सॉरी अभी हम लोग ने डिस्कस किया सिंगल वेरिएबल मॉडल्स वाले. सो इट इज डिटरमाइंड बाय इक्वेशन ऑफ द, जो हम लोग ने इक्वेशन फाइंड आउट किया, सो उससे हम लोग को ये इनिशियल एस्टिमेट मिलने वाला है. यूजिंग KDLOC as the measure of the size to determine the initial effort E of I in the person months, the equation used is of the type is shown below. So अगर हम लोग को ये फाइंड आउट करना है E of I is our what, is our effort in person months. एक बंदा एक महीने में कितना काम करता है. हाँ, अभी ऑब्वियसली ये कोर चीजें नहीं है. जब आप लोग इंडस्ट्री में 5-6 साल बिताओगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करोगे, दैट टाइम यू नीड टू डील विद दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन. ओके, सो E of I क्या है, एक बंदा कितना काम करता है, पर्सन मंथ्स द इक्वेशन. और KDLOC क्या है, सो देखो सोर्स कोड है KDLOC, मतलब लाइन ऑफ कोड के, मतलब 1000 में वो 1000 डेवलपमेंट लाइन ऑफ कोड, ऐसे में ऐसे हम लोग उसे बोल सकते हैं. ठीक है, सो इन कोकोमो प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. सो in this COCOMO model, the project are categorized into 3 types. First is organic, then second is semi-detached, and third is embedded. So organic में क्या है, development project can be treated of the organic type if the project deals with the developing a well understood application program. So if we create one well understood application program, the size of the development team is reasonably small, छोटा है, and the team members are experienced in developing similar methods of project. So छोटे सिनेरियो के लिए हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक है. एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर सिंपल बिजनेस सिस्टम, जो स्टार्टअप्स रहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट अवर ऑर्गेनिक. देन सेमी डिटैच्ड, a development project can be treated with semi detached type if the development consists of mixture of experienced and inexperienced staff, मतलब कंबाइन है, जहाँ पे प्रोफेशनल भी है एंड बिगिनर्स भी है. दैट इज ऑल अबाउट सेमी डिटैच्ड. एंड एम्बेडेड, a development project is treated to be embedded type if the software being developed is strongly coupled to complex hardware or if the stringent regulations on the operational method, that is ATM, air traffic control, अगर ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के साथ मैं डील कर रहा हूँ, then that is all about the embedded scenario. So according to Boehm, okay, अभी for 3 product categories, Boehm provides a different set of expression to predict effort. अभी ये तीनों के लिए ये Boehm नाम के बंदे ने ऑब्वियसली जो प्रोग्रामर रहेगा उसने प्रेडिक्ट किया है कि कैसे यूनिट हम लोग मंथली यूनिट सेग्रीगेट कर सकते हैं. एंड डेवलपमेंट टाइम फ्रॉम द साइज ऑफ एस्टिमेशन इन केलॉग. केलॉग मीन्स किलो लाइन ऑफ कोड. ओके, efforts estimation takes into account and productivity loss due to holidays, weekly off, coffee breaks, etc. मतलब कोई भी एक बंदा एक महीने में 24/7 काम नहीं करता. So we need to consider the factor that there are holidays in between them, weekly off रहेंगे, coffee breaks रहेंगे. ठीक है, so ये सब ध्यान में रखते हुए उसने सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन 3 स्टेज में
डिवाइड किया है, which is basic model, intermediate model and detailed model. So we are discuss this